આજના અમારા મહેમાન છે રાજભાઈ. સ્વાગત છે રાજભાઈ મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. કેમ છો રાજભાઈ? બસ મજામાં. So now that we have cleared the Gujarati vibe and the wind, let us get on with the question and answers, and hopefully you find this interview useful, and I'm sure it will help you plan your travel from any part of India to any part of Australia, because most of it is going to be the same. So let us begin, and let us first get to know our guest today. His name is Raj and he's from India. So Raj, please introduce about yourself very quickly so that the viewers know who you are and where you're from. Sure. Myself Raj Kakadia, and basically my native town is from Bhavnagar, and my family shifted for business to Surat. Okay. And आपने क्या पढ़ाई किया था ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, और आपका मोटिवेशन क्या था कि आप ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़े, और क्या सोच थी आपकी? Actually, after completing my 12th standard, I went to Ahmedabad for my bachelor's degree, where I completed bachelor's in chemical engineering from LD College of Engineering, and the college is one of the most recognized and oldest government institution of the Gujarat. Okay. तो अभी तो आइस ब्रेकिंग सेशन हो गया है, और अभी आप अगर हमको बताएंगे कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के टाइम पे फ़्लाइट्स का क्या प्रोसेस था, लाइक आपने कौन सा फ़्लाइट लिया, कितना घंटे लगे, आप अगर उसका एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे तो अच्छा होगा. Yes. Actually, I got my visa on 25th December of 2021 on the day of Christmas. And I started scrolling on the Paytm to find out the tickets. As Australia opened its border on 15th of December, only to New South Wales, Victoria and Australian Capital Territory. So the flights were only to Melbourne and Sydney. Yeah. There is no direct flight to Adelaide. And the flights which are providing services to Melbourne and Adelaide, these are the flights which have the duration of almost 30-40 hours of journey with a 14 to 20 hours of layover. Okay. And there is no certainty that the flight will reach. I have seen on the Facebook group that before 2 hours of their flight, the flight was cancelled. So I booked with Emirates Airlines on the 4th of January. Yeah. And I reached the Bombay airport, Chhatrapati Shivaji International Airport, at around 4 o'clock. Yeah. My flight was scheduled to be on 7 in the evening. Okay, so you were like 12 hours? No, okay. Just 3 hours. Oh, just, okay, sorry. 4 in the evening. Okay. And what was the price of the ticket, and do you regret booking Emirates, or it was a good journey? It was hopefully a good journey than the other airlines, because the ticket price was a little bit higher than the others, like around 1,60,000. Okay. Yes. That's a big deal. That's a big deal. That's really a big deal. So if you're someone who's planning to come, try to book your tickets as early as you can. But if you do not have a visa, we understand that it's going to be a bit of a risk. So plan in advance and try to be a little creative with the dates, and just to save some extra dollars, I think. Yes, I have a point to tell. Yeah, please. See, students, there are no rescheduling fees in the airlines, so that you can move your travel date further or backward also. Yeah. There are only cancellation charges, which are around 10 to 12,000, depends on the types of airline. Okay. So that there are no rescheduling charges. Okay. So that you can book if you feel that I can get my visa in a week or a 10 days or 15 days, so that you can book your ticket in advance also, so that you don't have to pay the higher prices. Right. No, that's actually something you should consider, because before we spoke, I did not have an idea that you could easily reschedule international flights as well. Yes. So that's a good information, so bear it in mind and make a note of it. So can you now tell us how the flight journey was, in the sense of how was the pre-boarding process like? Was it very challenging or what? No, I didn't found it very challenging, because after completing my check-in, when my luggage was weighed, and when I went after that I went to the immigration, and immigration officer, he asked me some few questions. Why are you going to Australia? What is your purpose? What the fees you have paid to the university? When did you get your visa? Okay. Etc. Okay. And then he allowed me to come here.
and I waited in the airport lounge for around an hour. Okay. So that after that my flight was at 7 a.m. and I landed in Dubai after completing 3 hours of journey at around 10. Yeah. And there is a 6-hour layover in the Dubai airport also. And the most important thing that to the students, that don't forget your vaccination certificate, because all the airports will require it, and all the immigration officers and other people at the airport staff will tell to show you the vaccination certificate. Okay, and that's another important point. After the pricing of tickets and the flexibility in changing the booking, the next thing is about vaccination certificate. So, Yes. how was the whole process of getting a negative report? Was it easy? Because in Australia it's very straightforward and you get it in like 24 hours, and if you can also get it immediately if you pay a premium amount. So, is it the same in India as well? No, is it not same in India? As in India, when you travel to Australia, you have to produce a negative PCR report, which is not early as than 72 hours before you reach your final destination. Oh. I was reaching Adelaide on 6th of January Okay. at 9 a.m. Okay. So I given my sample in India to the laboratory on 3rd of January at 12 o'clock in the afternoon. Okay. And I got my results at around 7 or 8 o'clock in the evening on the same day, 3rd of January, and my flight was scheduled to be on 4th of January at evening in 7 o'clock. Okay. So that there is a 24-hour already a gap between a result. Yeah. And then I traveled to Dubai. Yeah. And from Dubai, which is where is a 6-hour layover, and at the Dubai, the flight was scheduled to be departed on 5th of January at 3 a.m. in the morning. Oh, okay. And it was and from Dubai to Melbourne, it was a 14-hour journey, and when I reached Melbourne, it was already 11 a.m. 11 o'clock in the evening in the Melbourne, because there is a 7-hour time difference between Dubai and Melbourne. Right. I sat on the plane in Dubai at around 3 o'clock in the morning, and I landed in Melbourne at around 11 o'clock in the evening. And when I was in flight, my friend messaged me that your flight is cancelled from Mumbai to Adelaide, which was scheduled to be on the next day, 6th of January at 6 o'clock in the morning. Okay. So hopefully he booked the other flight, which is scheduled to be on 8 a.m. and hopefully it did not cancel. Okay. So did you come here within the 72 hours or was it a delay? No, I came here within the 72 hours, just in time. Just in time. On the 6th of January, my friend booked the ticket to Melbourne, ticket from Melbourne to Adelaide on 8 o'clock, and it is a 1-hour flight journey. Right. And I reached Adelaide airport at around 9 o'clock or 9:30 probably. Okay. So that my result is going to be expire on 6th of January at 12 a.m. 12 in the afternoon, like and I two and a half 2.5 hours early only. Okay. So the 72-hour window is not from the time of getting the report to boarding, but actually reaching the end point. Like if you want to reach Adelaide, then 72-hour window is to start from Mumbai and reach Adelaide. Yes. So my impression was completely different. All these days, in one of my previous videos, I said before your flight leaves, the window is 72 hours. Yes. But there's an important discovery, and I'm sorry if I've conveyed the wrong message. The point here is that 72 hours from the moment of getting the report till you reach the destination, in our case Adelaide. Yes. So I think that's one important thing. So what was the process after landing here, and can you tell what happened at Adelaide airport and what is your position now? Yes, sure. When I reached the Adelaide airport, I was told by the officer to do a PCR test within the 24 hours, and when I went to my friend's house, and then we both went for the testing, and there is a long queue, we have to wait for 1.5 hours to got our turn in the COVID testing. And the result was expected to be announced in 48 hours, next 48 hours, and I got my negative result also. Okay. Yes. That's good. So are you expected to take another test now, or it's done? Are you through all of the COVID related stuff? Yes, it's done. I do not expected
any more tests of sorts. Okay, that's really nice. I think we've covered everything, right from ticket prices to the flight times and the 72-hour window, as well as the things to do after reaching Adelaide. So अभी एक रैप अप करते हैं. आप एक मिनट का आप टाइम लीजिए और आप एक बार पूरा स्टेप्स बता दो हिंदी में, ताकि सबको क्लैरिफाई हो जाए कि प्रोसेस क्या है. आप टिप्स भी दे दीजिए कि टिकट कैसे बुक करना है. आपको जो लगता है कि आपने शायद गलती करी, या आपको लगता है कि आपके जो दोस्त आने वाले हैं वो गलती कर सकेंगे उन मामलों में, आप उसके बारे में ब्रीफली बता दीजिए, ताकि उसके हिसाब से हमारे व्यूअर्स प्लान कर पाए. एंड इफ़ यू गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट्स में छोड़ दीजिए. मैं राज भाई को अप्रोच करूंगा और वो हमको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. तो आप एक बार बता दीजिए वेरी ब्रीफली कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट फ्रॉम सिक्योरिंग द नेगेटिव रिपोर्ट टिल यहाँ पर पहुँचने के बाद का जो नेगेटिव रिपोर्ट लेना है, उसके बारे में आप एक बार जल्दी एक 1 मिनट विंडो में बता दीजिए. हाँ, आप अगर इंडिया से आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी नेगेटिव पीसीआर टेस्ट करवाना है. वो भी गवर्नमेंट आईसीएमआर में रजिस्टर है लेबोरेटरी, वहाँ से ही करवाना है आपको, क्योंकि वही लेबोरेटरी आपको प्रिंट करके रिपोर्ट देगी, वो भी बारकोड के साथ. अगर एयरपोर्ट पे आपका बारकोड के साथ रिपोर्ट भी स्कैन करते हैं तो आपका ही डिटेल खुलेगा, इसलिए फेक रिपोर्ट वहाँ पे चलता नहीं है. और डबल डोज का वैक्सीन सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे सब जगह पे शो करना पड़ेगा. मेरे पास बॉम्बे एयरपोर्ट पे भी मांगा था, दुबई एयरपोर्ट पे भी, मेलबर्न एयरपोर्ट पे भी, और इवन एडिलेड एयरपोर्ट पे भी डबल डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा था. इसलिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना भूले. और ऑस्ट्रेलियन ट्रैवल डिक्लेरेशन एटीडी का फॉर्म भरना 72 घंटों से पहले, आपकी फ़्लाइट जर्नी शुरू हो रही है उसके 72 घंटों से पहले भरना होता है. वो भी भर दे, वो मत भूले, क्योंकि हर जगह वो मांगेंगे डिक्लेरेशन आपका एयरपोर्ट का. और अगर आप अभी तो मेलबर्न और सिडनी में ही फ़्लाइट चालू है, और अगर आप किसी इंटरस्टेट ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप वो भी इंटरस्टेट बॉर्डर का क्लोजर का भी आप चेक कर ले. क्योंकि मैं एडिलेड आ रहा था तो एडिलेड की बॉर्डर तो ओपन थी विक्टोरिया से और न्यू साउथ वेल्स से, बट अभी पर्थ है या फिर ब्रिस्बेन है, उनकी बॉर्डर अभी ओपन नहीं हुई है ये स्टेट से. तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पर्थ या ब्रिस्बेन से, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इंटरस्टेट ट्रैवल अलाउड है इंटरनेशनल अराइवल के लिए कि नहीं है. सो बेसिकली अगर टिकट्स आप बुक करना चाहते हैं, आपका वीज़ा नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी, क्योंकि आप इन पर कॉन्फिडेंट हो कि 15-20 दिन में वीज़ा मेरा आ जाएगा, तो आप 15-20 दिन के बाद की भी कर सकते हो. और वो बुक अगर करते भी हो, एयरलाइन से कंफर्म कर लो एक बार कि आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो, आगे भी डेट ले सकते हो, पीछे भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. खाली कैंसलेशन चार्ज आप अगर टिकट कैंसिल करते हो तो भरना पड़ता है. रीशेड्यूल का शायद कोई एयरलाइन में चार्ज नहीं है. मैं एमिरेट्स से आया हूँ, एमिरेट्स में आप 10 बार चाहो तो 10 बार रीशेड्यूल करवा सकते हो, कोई चार्ज नहीं है रीशेड्यूल करने का. खाली आपको फेयर डिफरेंस पे करना होता है, जो भी है वो. तो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समराइज़ किया है हिंदी में. एंड राज भाई रियली थैंक यू, क्योंकि अगर मैं आ रहा होता ऑस्ट्रेलिया को इस टाइम पे, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कितना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बॉर्डर्स इतने बार खुलकर बंद हुए हैं. न जाने कितने बार हमको एडमिशन डिफ़र करना पड़ा है. और ये सब तो ठीक है, लेकिन पेरेंट्स लोगों का भी भरोसा उठ जाता है. बच्चे तो फिर भी पैशनेट होते हैं, बाहर जाने का एक जुनून होता है, तो वो लोग इन चीज़ों से अफेक्ट नहीं होते. लेकिन पेरेंट्स, क्योंकि वो जनरली इन्वेस्ट करते हैं हमारे एजुकेशन के ऊपर, तो आप अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो वो लोग ख़त्म हो जाते हैं. उनका पूरा एक जो कॉन्फिडेंस होता है एक गवर्नमेंट के ऊपर, वो थोड़ा हिल जाता है. तो वापस से उसको रिस्टोर करना मुश्किल है. तो अब फाइनली खुले हैं. आपको क्या लगता है कि बॉर्डर अभी वापस से बंद होगा, या अभी जितना जल्दी बच्चे आ सकते हैं आ जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? अभी तो लगता नहीं क्योंकि बॉर्डर बंद होगा, क्योंकि 2 साल इन्होंने बंद रख के देख लिया है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. जब भी खोलेंगे तभी केस बढ़ने ही वाले हैं. अगर वैक्सीन ले लिया है तो अच्छी बात है, केसेस माइल्ड रहेंगे, इतनी कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं रहेगी पॉपुलेशन पे. करेक्ट. क्योंकि क्या है, वैक्सीन ले लिया है तो इतना भी कोविड हमारे लिए खतरनाक नहीं है अगर वैक्सीन हम ले लेते हैं. और यहाँ पे तो अभी बूस्टर डोज भी चालू हो गया है. तो फिर क्या है, कोविड के सिम्टम्स दिखते हैं, सर्दी खांसी हल्का फुल्का रहता है, पर ज़्यादा कुछ ऐसी तकलीफ हो सके ऐसा कुछ अभी हो नहीं रहा है. तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले चीज़ तो आपको वैक्सीनेटेड रहना पड़ेगा. हाँ. और आप अपना टिकट्स थोड़ा एडवांस में प्लान कर लो ताकि आपको कॉस्ट बचे. और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जिस मोमेंट अपना टिकट करवाएंगे
वो मोमेंट से लेकर आपका एंड डेस्टिनेशन, चाहे वो एडलेड हो या कोई और सिटी हो, वहाँ पहुँचने तक आपको सिर्फ 72 आवर्स का विंडो है, उसी के अंदर आपको ट्रैवल कंप्लीट करना है। Yes. वो 72 आवर्स के बाद वो रिपोर्ट वो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है? उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी सवाल है जो ट्रैवल के रिलेटेड है, स्पेशली ये कोविड टाइम्स में, तो आप ज़रूर कमेंट्स में भेज दीजिए। अगर आप कमेंट करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आईडी मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं अगर कोई मेरे को क्वेश्चंस आएंगे तो या तो मैं उसको अगले वीडियो में आंसर करूँगा या कमेंट्स में रिप्लाई करूँगा। और सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे ट्रैवल के रिलेटेड, वो राज भाई के तरफ से जवाब मैं लेने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ऑथेंटिक जवाब मिले। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट एंड वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. If you liked it, consider sharing it with your friends, and do subscribe to my YouTube channel. Thank you, and thank you, Raj Bhai. Welcome.